Yes, good evening, guys. Prikshit, Vipin, Rimsha, Arvind, Kapil, Sonu, Akash. Good evening, beta. Good evening. Yes, we have already discussed. Yeah. So just waiting for one more minute. Let others join and then we'll start with the class. Welcome to the class, guys. Just give me a thumbs up that audio, visuals, everything is fine. Like you are able to hear, you are able to see. Ditya, good evening, beta. Good evening. Good evening, Rajay. Anshu, good evening. Yeah, just let me know if the audio, visuals, everything is fine, guys, so that I can start up with the class. Vijay Kumar, good evening, beta. Good evening, welcome to the class, guys. Welcome to the class. Naresh, very good. Okay, yeah, audio, visuals are fine. Yes, Naresh, Vijay, Ditya, very good, beta. So today we will be discussing the lower end along with the shaft also. So shaft का भी जो हाँ सरफेस वाले पार्ट्स थे वो रह गए, तो सरफेस वाले पार्ट्स रह गए हैं, लोअर एंड रह गया है, मसल अटैचमेंट्स रह गई हैं. ठीक है, या न्यू, वेरी गुड बच्चे, गुड इवनिंग, वेलकम टू द क्लास. सिद्धि, गुड इवनिंग. द्विजांश, गुड इवनिंग बेटा, वेलकम टू द क्लास, बेटा. Yes. So let us start, guys, with the shaft of the humerus. We were discussing about the shaft of the humerus, and I have already discussed the borders. Now we'll discuss about the we have discussed about the borders. Now we will be discussing about the surfaces of the humerus. Okay, so yes, put a heading as the surface of the humerus. Yes, Prikshit, everything is okay. Yes, everything is okay. So yes, now we are going to start up with the shaft of the humerus. Sure. So yes, in the shaft we have already discussed about the borders. Now we will be focusing on the surfaces of the humerus. Devnarayan, Sakib, Bache, good evening and welcome to the class. Yeah. Surfaces are basically divided into three parts, as I have already told you. We have the anteromedial surface, okay. Then we have the anterolateral surface, and at last we have the posterior surface. Now guys, you already know ki this one is basically the medial border. Okay, suppose this is the medial border. Okay, and yes, this one is the lateral border, guys. And in between the lateral and the medial border, we are having a border in between that is called as the anterior border, guys. Okay, we have the anterior border. Now the surface which is enclosed. Kumud, Bache, good evening. Nisha, welcome to the class, beta. Please kindly attend the session live. Siddhi, I hope you are in the class. इनके बीच में एंटीरियर और मीडियल के बीच में जो सरफेस एरिया दिख रहा है, which you are very much aware of, this surface area which you can see between the anterior and the medial borders, this surface area, guys, I'll use in another ink. Yeah, this surface area is basically the anteromedial surface. This is the anteromedial surface. Arbaz, welcome to the class. Yes, it is the anteromedial surface. Yes, between the anterior border and the medial border, we have a surface area that is referred to as the anteromedial surface. Now, the very first point that I will mention over here, write down, it lies between the anterior and the medial borders.
the anterior and the medial borders. Now, this surface, if you just trace it above, if you just trace this surface above, and if you just go above, you will find the, over here, you will find the bicipital groove, okay? So the upper third of this particular surface, okay, the upper third of this particular surface, you will be able to find a bicipital groove, okay, that is having two floors, the lateral lip and the medial lip. So you have to mention this also, okay, in your notes, that upper one third of the anteromedial surface presents, upper one third presents bicipital groove, or simply you know it is the intertubercular sulcus, and over here you will be having floor plus two lips, that is lateral and medial, Yes, Osama, welcome. Good evening, bache. Good evening. Yes. So that is about this, and a little below beta, over here you will find a foramen also. And can anyone tell me the name of this foramen which is found in the shaft region? ये मैंने जनरल एनाटॉमी में डिस्कस किया था, एक फोरामेन देखने को मिलता है. So I'm waiting for your answers. Which foramen will you like find over here? Like, what is the name of this foramen which is just situated on this anteromedial surface, just a little lower to the upper one third part? Sake bache, hello beta. Please attend the session live, guys, because it's high time you should realize कि attending lectures is like a necessary part of your life now. Hariom Sharma, very good beta. It is the nutrient foramen. Yes, nutrient foramen, very good. Hariom Rimsha. Yes, it is the nutrient foramen. So yes, very good. Siddhi, Arbas, Sakib, Kumud, very good beta. वो कहते हैं ना रशियन में खराशो, अतलीचना. I think excellent. Yeah, that wise you guys are like just rocking. Okay, Dev Narayan, Ditya, very good. Prakshit, very good. Chitesh, very good. Vipin, very good. Yes, it is the nutrient foramen, and write down a little below it. Shows nutrient foramen, and this nutrient foramen is basically directed downwards. Yes, Sonu, very good. This nutrient foramen is basically directed downwards. It is directed downwards. Okay. So yes, this was about the anteromedial surface. Now coming on to the next, that is the anterolateral surface. Anterolateral surface. Since you can see this is the anterior view, this is the medial border, this is the lateral border, okay. Over here we have the anterior border, okay, and between anterior and the lateral border you will find a surface area which is enclosed, okay. You will find a surface area which is enclosed between the anterior and the lateral border, guys, okay. This is what is referred as the anterolateral surface. So remember the anterolateral surface, write down the first point, it lies between anterior and lateral borders. Apart from that, guys, remember that its middle part shows a V-shaped
rough area that is referred to as deltoid tuberosity. Very important. Yes. Yeah, Prakshit, it is right. Yeah, you're right, beta. We have a V-shaped rough area that is referred to as the deltoid tuberosity. Deltoid tuberosity. And remember, over here, okay, like if I just want to mark it over here, you will see on this particular surface a V-shaped rough area, okay, a V-shaped rough area you will see, that is called as the deltoid tuberosity. And can anyone tell me the name of the muscle which is attaching over here? Can anyone tell me the name of the muscle which is attaching over here? Yes, perfect, perfect guys. Yes, it is the it is very good. Just go with the name guys. It is the deltoid muscle. It is the deltoid muscle, okay, which is attaching over here. Yes. It is the deltoid muscle. Prakshit, yes, very good beta. Dev Narayan, very good, very good. Perfect, perfect Kumar, perfect beta. So on the anterolateral surface, you will find a V-shaped rough area, and that rough area is basically referred to as the deltoid tubercle or the deltoid tuberosity. And over here, the muscle will be attached. Yes. Soumya, Sonu, Sakib, Arvind, Shivani, Siddhi, Hariom, very good बेटा. आकाश, very good. बिना आंसर्स देते रहो, याद होता जाएगा. अदरवाइज तो पढ़ते तो हो ही तुम लोग सारे. पढ़ते तो हो ही. Coming on to the next, I just wanted to discuss about the posterior surface now. Guys, this is something which I am focusing right now. It is the posterior surface. Okay, it is the posterior view. Posterior view where you are just able to see the spiral groove also. Okay, so remember the posterior surface पोस्टीरियर सरफेस. अच्छा मुझे ये बता दो ये कौन सी बॉर्डर होगी अगर ये पोस्टीरियर सरफेस ले रहा हो तो विच बॉर्डर विल बी दिस एंड विच बॉर्डर विल बी दिस. व्हाट आर ए एंड बी? व्हाट आर ए एंड बी? एंड दैट्स व्हाई जस्ट द लोकेशन गोज विद द नेम and the location goes with the name guys. What is A and B? नहीं 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 no no no. बॉर्डर्स नहीं पता चल रहे तुम लोगों को, इतने ढीले रिप्लाई हैं तुम लोगों के. सिंपली इट्स लाइक या देवनारायण वेरी गुड. इट इज ए इज मीडियल बॉर्डर. हेड है ना बेटा, हेड के साथ वाला तो मीडियल हो गया, ये लेटरल बॉर्डर हो गया. यस. शिवानी, दित्या, विपिन, साकिब, बेटा लेटरल कैसे होगा? हेड के नीचे वाला बॉर्डर है ना, पहला तो मीडियल होगा. प्रेक्षित, सौम्या, कुमो, दरबास, हरिओम, सिद्धि. या सो इट इज द surface area which is lying between these two borders. It is the posterior surface. So write down it lies between medial and lateral borders. It lies between medial and lateral borders. Yes, it lies between medial and lateral borders. Now guys, remember that basically there is a ridge which is present in the upper part. Okay, so write down that its upper 1/3 shows an oblique ridge, and remember which is passing downwards. Okay, which is passing downwards and laterally, and remember over here a muscle is attached. That is the lateral head of the triceps. Lateral head of the triceps muscle.
ट्राइसेप्स आप लोगों ने स्कैपुला में कहाँ पे पढ़ी थी, फटाफट से उसका लोकेशन बता दो, सो दैट यू गाइस रिमेंबर कि वेयर यू हैव रेड अबाउट द ट्राइसेप्स मसल, वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है. आई वांट टू नो द ओरिजिन ऑफ द ट्राइसेप्स मसल फ्रॉम द स्कैपुला बोन. आई जस्ट वांट द आंसर्स गाइस नाउ. हाँ. रिमेंबर दैट अपर वन थर्ड और फिर आ जाता है मिडल. Middle one third is crossed by the spiral groove, is crossed by the spiral groove. Okay, ये जो आपको देखने को मिल रहा है, this is the spiral groove guys. ये चीज that is the spiral groove. और spiral groove से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नर्व पास करती है. यस ग्लिनॉइड कैविटी है. हाँ विपिन, थोड़ा सा एनाटॉमिकल लैंडमार्क ग्लिनॉइड का भी, सुप्रा ग्लिनॉइड इंफ्रा ग्लिनॉइड हो गया ना, तो इंफ्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल वाले पार्ट में से, ग्लिनॉइड कैविटी में से नहीं है, ग्लिनॉइड कैविटी में से नहीं है. नो 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 नो, इंफ्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल. यस सौम्या, परफेक्ट आंसर. दित्या वेरी गुड. साकिब वेरी गुड. यस रिमशा वेरी गुड. परफेक्ट आंसर्स देखो. हाँ परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट. सोनू परफेक्ट. सोनू ग्लिनॉइड से नहीं, ग्लिनॉइड कैविटी है, ग्लिनॉइड सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल, इंफ्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल इंफ्रा वाले से है, इंफ्रा वाले से है. फटाफट से बता दो सुप्रा वाले से कौन सी मसल निकल रही है. सुप्रा ग्लिनॉइड ट्यूबरकल गिव्स ओरिजिन टू विच मसल ऑफ द आर्म रीजन. आंसर गाइस. यस कुमुद वेरी गुड वेरी गुड. कैविटी नहीं है बेटा, उसको ट्यूबरकल बोलेंगे. जस्ट बिलो द कैविटी और ट्यूबरकल इज प्रेजेंट ना, सो इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम द ट्यूबरकल, नॉट फ्रॉम द कैविटी. कैविटी इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. या हाँ या राइट राइट राइट. यस राइट राइट. So middle one third, meanwhile you are answering the supraglenoid tubercle wala part. I am just completing the statement that medial one third is crossed by the spiral groove and it is for the radial nerve guys. It is for the radial nerve. Yes हरिओम. बाइसेप्स ब्रेकाई, बाइसेप्स ब्रेकाई, बाइसेप्स बाइसेप्स हो गई ना आपकी. हाँ कपिल, देवनारायण, सौम्य, आकाश वेरी गुड बेटा. मतलब पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, अगर तुम्हें इतना कुछ याद आ रहा है. ओके or it is passing downwards, it is passing downwards and laterally. Now my question to you guys is, a patient came to you with a fracture of the shaft of the humerus. Which particular nerve will be injured in this case? पूरा एक ट्रॉमा की हिस्ट्री बना के देगा. patient was like met an accident and he was like he slipped off from the motorcycle just on an outstretched hand and a fracture of the shaft of the humerus was observed. So which particular nerve would be likely to be damaged in this particular case? So I want your answers guys. What is your opinion? So yes, I will be moving further ahead guys. Yes, so you all know this is the spiral groove. Yes, Devnaran, Shivani, Sakib, perfect beta. It is the radial nerve guys. So you all are aware that this is the spiral groove. This is the spiral groove और spiral groove से ही जो nerve pass करती है, spiral groove से ही जो nerve pass करती है, that is the radial nerve. That is the radial nerve which is passing in the spiral groove. Okay. और अगर shaft of the humerus fracture देखने को मिल रहा है, so most likely the nerve will be also injured because it is just in continuation with the bone. बोन से डायरेक्ट कनेक्शन में है. दैट्स व्हाई द रेडियल नर्व इज मोस्ट लाइकली टू बी डैमेज्ड इन केसेस ऑफ फ्रैक्चर ऑफ द shaft of the humerus. Yes, Pooja, very good. Siddhi, very good guys. Apart from that guys, now I'm going to tell you one more muscle that is just present beneath this spiral groove. Okay, basically a muscle arises that is called as the medial head of the triceps. Medial head of the triceps. तो मुझे बता दो कि हमने ट्राइसेप्स के कितने हेड पढ़े हैं अभी तक. हमने ट्राइसेप्स के कितने हेड पढ़े हैं और सबका ओरिजिन कहाँ कहाँ से है. हमने ट्राइसेप्स के, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेडियल ग्रूव. वेरी गुड बाय बेटा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, बिकॉज द रेडियल नर्व विल बी पासिंग थ्रू दिस ग्रूव, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रेडियल ग्रूव गाइस. वेरी गुड. हाँ ठीक है. So you can see that medial head of the triceps, medial head of triceps
arises from the, yeah, three heads होते हैं. प्रेक्षित वेरी गुड, विपिन वेरी गुड बेटा. बट इसके नाम बताओ, दिव्यनारायण नाम बताओ, मुझे नाम चाहिए. arises from the whole posterior surface below the spiral groove, तीन हेड्स होते हैं. इट्स ऑलरेडी क्लियर. शिवानी, सोनू, सिद्धि, रिमशा. ओके, बट आई जस्ट वांट द नेम गाइस. आई वांट द नेम्स. So it is just arising from the whole posterior surface below the spiral groove. You can see spiral groove ये है, posterior surface ये है, between the medial and the lateral border. क्योंकि ये medial border है तो यहीं से arise होता है medial head of the triceps muscle. Yeah, short head. ये गलती है. शॉर्ट हेड तो ना. चलो देखो और आंसर्स देखते हैं. पूजा बेटा, यही मुझे चीज करेक्ट करनी थी अभी. ओके, लेट एवरीवन आंसर, देन आई कम टू द पॉइंट अगेन. या लॉन्ग हेड बताया, मीडियल हेड बताया, एक और हेड बाकी है प्रेक्षित. चलो, एनीवेज कमिंग ऑन टू वन मोर पॉइंट, कि अगर एक और मसल के बारे में आप देखने की कोशिश करें कि लॉन्ग, लेटरल एंड मीडियल. ओके, चलो, नहीं इसमें मज़ा नहीं आया. चलो ठीक है, दिस इज योर होमवर्क नाउ. आई जस्ट वांट टू नो हाउ मेनी ट्राइसेप्स में शॉर्ट हेड होता है, लॉन्ग हेड होता है, लेटरल हेड होता है. ओके, शॉर्ट हेड होता है, लेटरल हेड भी होता है. चलो, वेरी गुड, परफेक्ट. चलो, ये अब आप लोगों का काम है बताना. नाउ गाइस, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज द एंटीरियर सरफेस. ठीक है, दिस इज द एंटीरियर सरफेस, and in the interior surface guys, you are able to locate the medial border and you are able to locate the lateral border, okay, of the shaft region. अब इस shaft region में you will see a muscle that is brachialis. Okay, so write down a point that is brachialis. Basically it arises from the lower half of the anterior aspect of the shaft. ठीक है प्रेक्षित, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द शाफ्ट. तो इसकी लोकेशन बच्चे कुछ इस टाइप से है कि अब सपोज this is something, a muscle which will be located like this. Okay, it is arising from this particular part. Okay, lower half. Okay, lower half थोड़ा सा और नीचे बना लेता है इसको. ठीक है, so this is the location of the muscle which is arising from this lower half. Okay, on the interior surface, and this muscle, yeah, this particular muscle is nothing but the brachialis. Guys, yes, it is the brachialis. Okay, brachialis. Chalo guys, is it done guys? Just give me a thumbs up that you understood the shaft of the bone clearly, so that I can come to the lower end of the bone. और उसके बाद दो चार मसल्स और है तो उसमें भी हम लोग डिस्कशन करेंगे. So yes guys, just give me a thumbs up that you all are like done with the shaft of the bone. Okay, the posterior surface, everything is done. Okay, I'll come to this diagram also, but after discussing the lower end of the humerus.
चल, प्रीक्षित, विपिन, देवनारायण, कुमुद, शिवानी, सिद्धि, दित्य, आकाश, वेरी गुड बेटा, very good. Now coming on to the lower end of the humerus. Now coming on to the lower end of the humerus, and divide the lower end now. Yes, yes, divide the lower end now, guys, into three parts majorly. We have the two articular parts, that will be involved in the formation of joint. Apart from that, guys, we have two epicondyles, and you already know the names of the two epicondyles. That is the medial epicondyle, and the lateral epicondyle. Medial epicondyle and the lateral epicondyle. Apart from that, guys, you will see one more thing, that is you will have three fossas which are present. And the name of three fossas are olecranon fossa, we have the radial fossa, and along with that we have the coronoid fossa. हमने एक टर्म पढ़ा था कोरोनॉइड ट्यूबरकल. आई वांट टू नो वेयर इट इज प्रेजेंट, एग्जैक्ट लोकेशन, एंड यहाँ पर कोई अटैचमेंट है या नहीं ये भी बताओ फटाफट से. यस. Now, guys, I will be starting with the articular parts. Okay, now I will be starting with the articular parts. I will be starting with the articular parts, and you are very much clear. Articular parts are basically two over here. Okay, two over here. We have the trochlea and the capitulum. Trochlea and the capitulum. या लेटरल 1/3 ऑफ द क्लैविकल. ठीक है देवनारायण, उसमें कहां पर प्रेजेंट होता है लेटरल 1/3 ऑफ द क्लैविकल? ओके, वेयर, ओवर वेयर, कहां पे? तो आर्टिकुलर पार्ट्स दो होते हैं. तो रिमेंबर गाइस, द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज द ट्रोक्लिया, which we are going to discuss right now. Now guys, remember, this is the anterior view of the lower end of the humerus. हाँ ठीक है देव नारायण, प्रेक्षित, clavicle, okay. Inferior surface, perfect Rimsha. It is the inferior surface of the lateral third of the clavicle. हरिओम, yes, clavicle inferior surface, lateral side, पूरा बोलना है देव नारायण. yes, perfect. Anterior view of the lower end of the humerus, and this is the posterior view. सबसे पहली बात कि ट्रोक्लिया आपको यहाँ पर परफेक्टली नजर आएगी. दिस स्ट्रक्चर विच यू कैन सी ओवर हियर, ये मीडियल साइड हो गई एंटीरियर व्यू में, ये लेटरल साइड हो गई. तो ट्रोक्लिया जो है यू विल गेट इट ऑन द मीडियल एस्पेक्ट. ठीक है, तो ट्रोकिया इज बेसिकली अ पुली लाइक स्ट्रक्चर. यस, एवरीवन इज राइट. देवनारायण, साकेत, प्रेक्षित, वेरी गुड. Trochlea is basically a pulley-like process. It is a pulley-like process covering the anterior, inferior and posterior parts देखो, ये आगे की तरफ जो दिखाई दे रहा है ये एंटीरियर पार्ट हो गया. ठीक है, नीचे की तरफ जो दिखाई दे रहा है दैट इज द इंफीरियर पार्ट. ठीक है, और पीछे की तरफ जो दिखाई दे रहा है दैट इज द पोस्टीरियर पार्ट.
तो इट इज अ पुली लाइक प्रोसेस विच इज कवरिंग द एंटीरियर, आगे की तरफ, नीचे की तरफ और पीछे की तरफ। इट इज कवरिंग ऑल द पार्ट्स ऑफ द medial articular part of the lower end. Medial articular part of the lower end. Okay, now guys, can anyone tell me कि ट्रोक्लिया जो है मीडियल साइड पे प्रेजेंट है, और मीडियल साइड पर ही जो फोरआर्म में बोन होती है उसका नाम क्या होता है? फोरआर्म में मीडियल साइड पर ही एक बोन प्रेजेंट होती है। ओके, नेम बी, कि बी कौन सी बोन है विच इज लोकेटेड और सिचुएटेड इन द फोरआर्म। यू विल गेट द आंसर कि ये किसके साथ जॉइंट बनाएगी। सो ट्रोक्लिया के बारे में यू कैन राइट वन मोर पॉइंट दैट इट आर्टिकुलेट्स, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स गाइस। कौन सी बोन प्रेजेंट है? फटाफट आंसर्स तो यार, यू गाइस आर लाइक वेरी सौम्या, दित्या, रिंशा, साकिब, शिवानी, देवनारायण, सिद्धि, अरबाज, परफेक्ट। प्रेक्षित परफेक्ट। अल्लाह बोन प्रेजेंट होती है तो ऑब्वियसली अल्लाह के साथ ये अटैच करेगी, इट विल फॉर्म द जॉइंट। इट आर्टिकुलेट्स विथ द trochlear notch, with the trochlear notch of ulna. It articulates with the trochlear notch of the ulna. Yes, everyone is right. Perfect, perfect, perfect guys, everyone is right. It articulates with the trochlear notch of the ulna. Okay, and remember, अब मुझे फटाफट से लिप बता दो, ये कौन सी वाली लिप होगी? ये कौन सी वाली लिप होगी विच आई एम मार्किंग विद ए, और ये कौन सी लिप होगी विच आई एम मार्किंग विद बी? तो ए और बी लिप बता दो कौन सी लिप होगी। सो इट आर्टिकुलेट्स विद द ट्रोक्लियर नोच ऑफ द अल्ना। ओके, सो रिमेंबर आई एम राइटिंग दैट इट्स डैश लिप, यू आर गोइंग टू फिल ओवर हियर सी। ए, बी और सी आपको फिल करना है अभी, कि ए कौन सी लिप है, बी कौन सी लिप है, और वो दोनों आपको यहाँ फिल करना है सी में, कि दोनों में से कौन सी आएगी। इट्स डैश लिप प्रोजेक्ट्स मोर डाउन। यस, साकिब, सौम्या, वेरी गुड, वेरी गुड। शिवानी, रिंशा, देवनारायण, दित्या, अरबाज, वेरी गुड। मोर डाउन देन द लेटरल लिप, लेटरल लिप। तो यस, इट इज द मीडियल लिप, इट इज द लेटरल लिप, और मीडियल लिप जो है लेटरल लिप के मुकाबले में इट इज प्रोजेक्टिंग मोर डाउनवर्ड्स, इट इज प्रोजेक्टिंग मोर डाउनवर्ड्स। यस, इट इज प्रोजेक्टिंग मोर डाउनवर्ड्स गाइस। परफेक्ट, 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 बहुत बढ़िया, 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 बिल्कुल मज़ा आ गया। तो अभी ना घर में कोई क्या कहते हैं, गेस्ट वगैरह आए हुए थे, और अभी सडनली ना घर में मार्केट से सामान आया हुआ था, काजू कतली आई हुई थी, रसगुल्ले आए हुए थे। तो उनसे ज़्यादा हैप्पी मैं तुम लोग जो आंसर्स करते हो उससे ज़्यादा हो जाता हूँ खुश। ऑल दो आई एन्जॉयड जो डिफरेंट टाइप ऑफ पकौड़ाज आए हुए थे घर में, और जो मिठाई आई हुई थी, बट यू गाइज आर जस्ट सिटिंग इन अ फॉरेन कंट्री एंड यू वुड बी लाइक मिसिंग ऑल दो स्वीट्स एंड एवरीथिंग। सो यस, कोई बात नहीं, सैक्रिफाइसेस तो करने ही पड़ते हैं। सेकंड आप लोग हेडिंग डालिए कैपिट्यूलम। Capitulum, basically it is Pooja, yes it's right, yeah. So capitulum, basically it is a small ball like process. You can see over here it is a small ball like process. Okay, it is a small ball like process which you can see over here. Yes, small ball like process lying lateral to the trochlea. Remember guys, the capitulum covers the anterior and inferior surfaces okay
only of the lateral part of the articular surface of the lower end. Articular surface of the lower end. कपिल सेस मत याद दिलाओ अरे तुम्हारी कोई एक्स की याद थोड़ी दिला रहा हूँ, मिठाई तो है, ये तो जहन में आनी चाहिए ना। एक्स की याद दिलाने पे पता है इतना रोया जाता है, एक्स गर्लफ्रेंड ना, मतलब कुछ और मत समझ लेना यार। लाइव क्लासेस चल रही ना, कॉपीराइट और लग जाएगा, बंद और हो जाएगी, ठप जाएगी वीडियो। So yes, moving ahead, so it covers the interior and inferior surfaces only of the lateral part of the articular surface of the lower end. And remember guys, one more point, that it articulates with the upper surface of the head of the radius. Upper surface of the head of the radius. Sakib or Akash is laughing. चलो perfect guys. लैग आ गया है क्या इंटरनेट में? चलो anyways guys. चलो मूविंग अहेड, कैपिटुलम यू कैन वेरी वेल फाइंड कि सर ये तो हेड ऑफ, क्योंकि लेटरल साइड पे लेटरल बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर है, और अल्टीमेटली दिस इज विल बी आर्टिकुलेटिंग विद द लेटरल बोन ऑफ द फोरआर्म, दैट इज द रेडियस। तो रेडियस के हेड के साथ ये बेसिकली कनेक्ट करता है। यस, so that is the reason it is forming the joint. Okay, so these are the articular surfaces, trochlea and capitulum. Done. Just give me a thumbs up guys that you all have written this. I can just move on to the next part, that is the epicondyles. Guys. चलो, प्रीक्षित, दित्या वेरी गुड, देवनारायण, कुमुद, विपिन, पवन, आकाश, सिद्धि, शिवानी, बेटा लास्ट तक बने रहो, चीजें याद होती चली जाएंगी। सोनू, रिमशा वेरी गुड, अरविंद वेरी गुड बेटा। चलो परफेक्ट, पूजा वेरी गुड। सो राइट डाउन द we will be discussing now the epicondyles of the lower end. Okay, so remember guys, we have two epicondyles. Kapil, Sakib, Hariom, perfect beta. So we have two epicondyles. You already know we have the medial epicondyle and we have the lateral epicondyle. So yes guys, so write down, we have two epicondyles. The very first one, it is the lateral epicondyle, and the other one, it is the medial epicondyle. So remember guys, the lateral epicondyle, basically it projects from the lateral side of the lower end. So this is the lateral side, okay, this is the lateral border, lateral side, okay. So it projects from the lateral side of the lower end, okay. It projects from the lateral side of the lower end, okay. It is less prominent than medial epicondyle. Medial epicondyle is more prominent, बाहर उभर के
बहुत अच्छे से मीडियल एपिकॉन्डाइल टच, पता है मीडियल एपिकॉन्डाइल ना सबक्यूटेनियस भी होती है, आप छू कर भी दे सकते हो, बट when we are comparing it with the lateral epicondyle, guys, it is like not more prominent. Okay, so I'll just compare both of them and I will write this point that it is less prominent than the medial epicondyle. Apart from that, guys, बेसिकली इसमें अगर हम दो सरफेस की बात करें कि लेटरल एपिकॉन्डाइल का एंटीरियर सरफेस भी हो सकता है, एंटीरियर सरफेस, और वन मोर सरफेस इज देयर दैट इज द लेटरल सरफेस, one more surface is there that is the lateral surface. So remember guys कि anterior surface पे you will find the muscle that is attached to the anterior surface, and write down it is the common extensor origin. कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन. मुझे फटाफट से बता दो, ये जो मसल मैं आपको इंटीरियर सरफेस पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन का काम क्या होगा, कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन का वर्क क्या होगा, जस्ट बाय द नेम गाइस. आई वांट टू नो हाउ मच यू कैन रिलेट दिस टू द जनरल एनाटॉमी. कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन, दैट इज CEO. What will be the function of this particular muscle that is attached on the interior surface of the lateral epicondyle? Anterior surface of the lateral epicondyle. So waiting for the answers guys. Yes, Pooja, extension, Devnarayan, extension. अच्छा, extension में angle is decreased or increased? Just let me know what is actually happening to the angle between the arm and the forearm. That I also want to know. One more thing guys, lateral surface present है, lateral surface present है, और इसके साथ एक और surface है, that is the posterior part, that is the posterior surface. और posterior surface पे अगर आप देखने की कोशिश करो कि ये तो medial end हो गया और ये lateral end है, ये lateral end है. posterior surface पे you will find a muscle over here. Okay, and that muscle is basically ये lateral epicondyle है, और ये जो muscle हो जाती है that is enconius. Yes, अरबाज, पूजा, देवनारायण, साकिब, वेरी गुड बेटा, सिद्धि वेरी गुड, उमेर वेरी गुड, विपिन डिक्रीज इंक्रीज. चलो ये भी अब डाउटफुल हो गया तुम लोगों के लिए. अरविंद, प्रेक्षित, सोनू थोड़ा सा, तो दैट मसल इज सिंपली रेफर टू एज द एनकोनियस मसल. सो राइट डाउन की पोस्टीरियर सरफेस पे हमें एनकोनियस देखने को मिलती है. एनकोनियस मसल यू विल फाइंड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस गाइस. एनकोनियस मसल, yes, it is the enconius muscle. Yeah, increase, extension, angle increase. ऑब्वियसली बात है ना, फ्लेक्शन में तो एंगल कम हो गया और इसको वापस लेके जाओगे तो एंगल बढ़ जाएगा ना दोबारा से. सो अल्टीमेटली द एंगल विल इंक्रीज whenever you flex your hand. The angle is, supposing it is just try to increase between the arm and the forearm. So yes guys, perfect बेटा. तो ये था लेटरल एपिकॉन्डाइल के बारे में. और अगर मीडियल एपिकॉन्डाइल के बारे में डिस्कस करें, so write down about the medial epicondyle. ये वाला स्ट्रक्चर जो है मीडियल एपिकॉन्डाइल. चलो अब इस स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो मीडियल एपिकॉन्डाइल है, अनुष्का सेज सर कैन यू प्लीज सजेस्ट सम बुक्स फॉर सेकेंड ईयर. विच सब्जेक्ट बेटा? Madam, I'm planning to take a session tomorrow on guidelines of first second year की पढ़ाई कैसे करनी है and all that, syllabus, course, textbooks, notes, everything. If you want, I can do it on YouTube live tomorrow. We can like have a like 15 or 20 minute discussion with all your doubts, whatever you have,
and ultimately I will come up with the things that what I feel and what you should study in the summer vacation or before going to the second year, and how you should approach the second year. That is also very much required at this time, because second year के ख़त्म होने तक कम से कम 6-7 सब्जेक्ट तो तैयार हो जाने चाहिए एग्जाम के लिए. So that is like my idea कि I can come live on YouTube, but that वो भी तभी फ़ायदा है ना कि जब तुम लोग आके आओगे, आते ही नहीं हो. Yes. मतलब I can suggest you before going to you the foreign country, if you like came to India or you are in foreign or you are planning to come to India and again return back, what all things you can just make that will make your second year a bit easier. That will make your second year a bit easier for you people, सो डैट कि 10 जगह भागना नहीं पड़ेगा. पता है माइंड में एक रोड मैप तैयार होता है ना कि हाँ इसी तरीके से पढ़ना है. सर ने एक बार बता दिया. बिलीव मी गाइस, माय आइडियाज हैव ऑलवेज वर्कड फॉर मेनी स्टूडेंट्स गाइस, एंड दैट्स वाई ब्लाइंडली आप लोग अगर मुझ पर ट्रस्ट करोगे कि हाँ सर इस तरह से पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ना है, इसी अप्रोच से चलना है, शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं, टेक्स्ट बुक्स पढ़ने हैं, तो इन दैट केस आई विल बी एबल टू गाइड यू मोर गाइस कि आप लोग इफ़ यू विल फॉलो व्हाट आई विल से और बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं दिखाओगे, तो दैट इज़ समथिंग विच विल फेवर यू इन फ्यूचर. ये होता है 2 दिन आते हैं क्लास में, तीसरे दिन बैठ जाते हैं. सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ आई प्रेफरेबली फील, क्योंकि फिर 10% रिजल्ट भी आता है. तो यही है कि क्लासेस मतलब ठीक है, जस्ट लेट मी नो व्हाट यू वांट. मीनवाइल आई विल राइट. यस, मीनवाइल आई विल राइट. Yeah, so I'm coming on to the medial epicondyle, because सबके subjects तो same ही होते हैं foreign में. Medial epicondyle, and remember it projects from the medial side of the lower end, medial side of the lower end. It is more prominent than the lateral epicondyle. It is more prominent than the lateral epicondyle. And it is subcutaneous. Apart from that guys, remember that its anterior surface will actually give you an origin of a muscle over here, that is the common flexor origin. So it is common flexor origin. Okay, this is the muscle attachment. Over here. That is the common flexor origin. Apart from that guys, remember its posterior surface basically its posterior surface will actually show a groove over here. Okay, a groove will be present over here. A groove, basically it is a shallow groove present on posterior surface. And remember, this shallow groove which is present on the posterior surface, it is for the ulnar nerve guys. So a shallow groove which is present on the posterior surface guys, it is for the ulnar nerve. Now my question to you guys is, सबसे पहली बात तो ये सबक्यूटेनियस होती है. If there is a fracture of the medial epicondyle of the humerus, which nerve is likely to be injured? Answered in the chat box guys. I hope I have asked you this question yesterday also, just coming on to the fact that this is also something which is very much important.
Medial epicondyle, lateral epicondyle done. Two articulations done. Devnarayan, perfect beta. It is the ulnar nerve. Yes. Friction, perfect, perfect. It is the ulnar nerve. Yes. Now coming on to the three fossas which are present. Three fossas which are present. Guys, remember this is the posterior view. This is the posterior view. And this is the anterior view. ये सब के आंसर सही है. अरविंद, साकिब, सिद्धि, शिवानी, सोनू, रिमशा, आकाश, कुमुद, अनुष्का, पूजा, हरिओम. वेरी गुड, परफेक्ट बेटा, परफेक्ट. मजा आ गया बिल्कुल. चलो, अब तीन फोसास प्रेजेंट है. तो एक फोसा, ये जो फोसा आप लोग को देखने को मिल रहा है विच इज ऑन द मीडियल साइड. देखो ये मीडियल की तरफ है और ये वाला जो फोसा है एक वो लेटरल साइड की तरफ है. तो लेटरल साइड की तरफ जो फोसा है, जो गड्ढा देखने को मिल रहा है, इट इज कॉल्ड एज द रेडियल फोसा. ओके, इट इज कॉल्ड एज द रेडियल फोसा. और जो मीडियल साइड पर आप लोग को देखने को मिलेगा ये वाला जो फोसा प्रेजेंट है, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज द कोरोनॉइड फोसा. कोरोनॉइड फोसा. कोरोनॉइड फोसा. यस, एवरीवन इज राइट, एवरीवन इज राइट. एंड पोस्टीरियर व्यू में जो एक बड़ा सा फोसा देखने को मिलता है, दैट इज बेसिकली द ओलिक्रेनॉन फोसा. ओलिक्रेनॉन फोसा. So we will write that we have three fossas which are present. Okay, we have three fossas. You can very well see we have the coronoid fossa. Coronoid fossa. So discussing about the coronoid fossa, guys, you can see कि किसके ऊपर present है, just above the trochlea. So it is a shallow depression. A shallow depression above the trochlea. Above the trochlea on the anterior surface of the lower end. On the anterior surface of the lower end. It is a shallow depression above the trochlea on the anterior surface of the lower end. Now what is its function? It receives, क्योंकि ये मीडियल साइड पर है तो यहाँ पर बोन कौन सी होगी, अल्ना होगी नीचे. तो ये अल्ना का जो कोरोनॉइड प्रोसेस है उसकी टिप को अकोमोडेट करता है ड्यूरिंग फ्लेक्शन. सो इट रिसीव्स द टिप ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस. It receives the tip of the coronoid process of ulna in full flexion of the elbow. मतलब एल्बो को पूरा आप ऊपर की तरफ लेकर आओगे, सो जो अल्नाकार कोरोनॉइड प्रोसेस है, जो उसकी टिप है, वो पूरी की पूरी आकर इस गड्ढे के अंदर अकोमोडेट हो जाती है. ठीक है, इस फोसा के अंदर अकोमोडेट हो जाती है. तो दैट्स द फंक्शन ऑफ द कोरोनॉइड फोसा. ओके, कोरोनॉइड फोसा. सो दैट वाज अबाउट द कोरोनॉइड फोसा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, द सेकंड वन, दैट इज द रेडियल फोसा. रेडियल फोसा. Now guys remember that radial fossa, बेटा ये फोसा तो कैपिटुलम के ऊपर देखने को मिल रहा है. ठीक है, और ये फोसा लेटरल साइड पर प्रेजेंट है. सो लोकेशन, और ये एंटीरियर व्यू में देखने को मिल रहा है. ये कौन सा व्यू है? एंटीरियर व्यू में आप देख रहे हो कि कैपिटुलम के ऊपर एक शैलो डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, मोर प्रोमिनेंट ऑन द लेफ्ट साइड. दैट इज द लोकेशन ऑफ द this olecranon radial fossa. So write down that it is a very shallow depression. A very shallow depression on the anterior surface of the lower end. On the anterior surface of the lower end
above the capitulum, above the capitulum. And remember, what is the function of this particular fossa? It receives the margin of the head of the radius, margin of the head of the radius in full flexion of the elbow. जब भी एल्बो को फुल फ्लेक्स करेंगे तो हेड ऑफ द रेडियस विल अकोमोडेट इन दिस रेडियल फोसा विच इज सिचुएटेड जस्ट अबव द कैपिटुलम and more on the lateral side. So that is the function of the radial fossa, guys. That is the function of the radial fossa. Coming on to the last one, that is the olecranon fossa. Coming on to the last one, that is the olecranon fossa. And remember, guys, I'll just use a different color for this so that you don't mix up anything. Olecranon fossa is basically a deep depression. A deep depression on the posterior surface, on the posterior surface of the lower end जस्ट अबव द ट्रोक्लिया. ये ट्रोक्लिया है, ट्रोक्लिया क्योंकि पीछे भी कवर करता है, पोस्टीरियर सरफेस में ट्रोक्लिया मतलब पोस्टीरियरली भी कवर कर रहा है, तो जस्ट अबव द ट्रोक्लिया ऑन द पोस्टीरियर व्यू, ऑन द पोस्टीरियर सरफेस यू विल फाइंड अ डीप डिप्रेशन just above the trochlea, and that is referred to as the olecranon fossa. Okay, now what does it do? It basically lodges the olecranon process of the ulna. So write down the function of this, that it lodges the olecranon process of the ulna, olecranon process of the ulna when elbow is full extended. मेरा क्वेश्चन का आंसर देना. फ्लेक्शन में विच फोसा इज रिस्पॉन्सिबल, एक्सटेंशन में विच फोसा इज रिस्पॉन्सिबल, फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट which fossa is basically playing a role, and extension में which fossa is playing the role. Okay, so in that case it will be like more clear to you guys. I hope all the fossas are clear to you guys, all the three fossas that I have discussed. Okay, the articular parts and the both condyles, the lateral condyle and the medial epicondyle. Okay, both the epicondyles are done. So the lower part is done from my side. The lower part is done from my side. All the muscle attachments which were like necessary, I just told you. Now I will come to condylar ridge also. So just give me the answers, guys. Yeah, just waiting for the answers, guys. अच्छा, किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है, जस्ट आई फॉरगॉट द चैट बॉक्स. ओके, व्हाट इज द स्पर इन द एल्बो? स्पर, ओके, स्पर बेसिकली तो बेटा ऑस्टियोफाइट्स हो गए ना, ये तो क्या कहते हैं, बोनी प्रोजेक्शंस हो गई ना, क्या कहते हैं, बोनी प्रोजेक्शंस हो गई. सो अल्टीमेटली ये क्या कहते हैं, जो जॉइंट का वो वाला पार्ट विच इज नॉट वर्किंग और विच इज जस्ट टर्न्ड आउट, इज जस्ट रिस्पॉन्सिबल टू रिमूव दैट. आई विल डिस्कस इट आल्सो लेटर in the clinical anatomy part, core anatomy part. Yes, flexion, radial coronoid extension, olecranon, very good. Prakshit, very good. Olecranon, very good. Shivani, Gaur, Rimsha, very good. Coronoid and radial and flexion, olecranon and extension, very good guys. Perfect, perfect, perfect. चलो, ये सब चीजें क्लियर हो गई, ये सब चीजें क्लियर हैं. Yes, yes guys.
यस गाइस, परफेक्ट परफेक्ट गाइस। हम्म। चलो परफेक्ट। चलो गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई एम ऑल्सो बिट टायर्ड टुडे, सो लाइक 1 hour इज ऑलवेज लाइक completed, so yeah. Hmm. I'll continue the lecture tomorrow, guys. I'll continue it tomorrow. I hope you all enjoyed the lecture. You have learned the lower end, the surfaces of the shaft also. Time लगता है चीज़ों को करने में, but believe me, once you are done with it, you guys will like enjoy doing things much more like मज़ा भी आता है फिर ना सब्जेक्ट को पढ़ने में, याद करने में. Okay, so okay, okay guys.